The only thing that could have discouraged Washington was actually some sanity in Pakistan. As long as this insanity continues, और ये insanity ही है, ठीक है ना, जिस तरह से पिछले 2 साल से जो कुछ होता है, मतलब it cannot be justified in any manner. किसी तरीके से justify नहीं हो सकता, especially when you claim to be a democracy. ठीक है ना, या तो आप कहें कि जी हम personalist authoritarian state बन गए और हम जो मर्जी करना चाहें हम कर सकते हैं, फिर एक और dimension खुल जाएगा. देखिए मैग्निट्स्की sanctions का कोई मकसद है ना. There is a bill that is passed, right, and it has a very sweeping kind of mandate under that bill. आप उन मुल्कों को जरूर सैंक्शन करेंगे जो डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करते हैं, जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जहाँ पर जो है वो स्टेट ऑपरेशन है, ये उसी की कंटिन्यूएशन है, ठीक है ना. इस वक्त जो है पूरे दुनिया में देख लें आप, कोई आपको स्टेट नजर आती है सिवाय कोरिया जहाँ पर इस किस्म की जो है, इस किस्म के जो है ऑपरेशन है इस दुनिया में, आज की दुनिया में, विच इज वेरी कनेक्टेड, हर चीज कनेक्टेड है, आपकी इंफॉर्मेशन कनेक्टेड है, आपके जो है ट्रेड बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे. तो आप इस किस्म की जो है वो हडर्मी करेंगे. आपका जो डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि जी हम तो वेंटिलेटर पे हैं, तो फिर जिसका बटन वेंटिलेटर के पास है फिर उसकी आपको सुननी पड़ेगी. मैं आपको पीटीआई का पर्सपेक्टिव दे देता हूँ. वी आर नॉट लुकिंग टुवर्ड फोन कॉल फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प टू से फ्री इमरान. नो, वी आर नॉट लुकिंग. वी आर लुकिंग फॉर एन इंडिजिनस मूवमेंट दैट विल फ्री इमरान. ही हैज बीन डिनाइड हिज लीगल राइट, ही हैज बीन डिनाइड हिज बेसिक फंडामेंटल राइट. ठीक है ना, मुलाकात नहीं होने दे रही, बेटों के साथ बात नहीं होने दे रही, हर हफ्ते में जेल मैनुअल कहता है कि फैमिली के साथ उसकी मुलाकात होनी चाहिए. इट्स ओनली ह्यूमैन, ह्यूमैनिटी डिमांड्स इट. अब देखिए केपी गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने प्रिजनर्स के लिए वीडियो कॉल सिस्टम सेटअप किया, so they can talk to their families, they can meet their families through a video call. Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर. ये है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स. हमारे साथ हैं फैसल शेरजान साहब. फैसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए सर. जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जफर, हैप्पी टू बी हियर, ग्लैड टू बी हियर, ऑनर्ड टू बी हियर. ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू विद अस सर. आपका तारुफ एक दफा मैं दोबारा करा दूं आपकी इजाजत से. फैसल साहब मीडिया सेल को देखते हैं पीटीआई के. पाकिस्तानी टेलीविजन इंडस्ट्री के साथ एक लंबा इनका ताल्लुक रहा है. He has been leading media channels. तो इस मुख्तसर तारुफ के साथ आगे चलते हैं. फैसल साहब, 2 बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं. एक तो ये पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, ये बिल पेश हुआ है कांग्रेस में. जो विल्सन साउथ कैरोलिना के कांग्रेसमैन हैं और जिमी पेनेटा कैलिफोर्निया से, इन 2 कांग्रेसमैन ने ये पेश किया है बिल और इसको डिस्कस किया जा रहा है. मेरे पास खबर है यहाँ से, आई कैन रीड इट फॉर यू इफ यू लाइक. न्यूज़ एक्स पे ये रिपोर्ट हुई है और ये भी इसमें कहा गया है कि द बिल वाज आल्सो अ मेजर इशू ऑफ डिस्कशन ड्यूरिंग अ डिप्लोमेटिक रिसेप्शन एट द पाकिस्तान एम्बेसी ऑन मंडे इवनिंग. पाकिस्तान एम्बेसी Washington, where Pakistani diplomats voiced concerns but hoped that it would not pick up enough momentum for enactment. They pointed to Pakistan's ongoing collaboration with the US in counter-terrorism as an aspect that might discourage Washington from going ahead with retaliatory measures. So, उम्मीद ये की जा रही. The only thing that could have discouraged Washington was actually some sanity in Pakistan. As long as this insanity continues, और ये insanity ही है, ठीक है ना, जिस तरह से पिछले 2 साल से जो कुछ होता है, मतलब it cannot be justified in any manner. किसी तरीके से justify नहीं हो सकता, especially when you claim to be a democracy. ठीक है ना, या तो आप कहें कि जी हम personalist authoritarian state बन गए और हम जो मर्जी करना चाहें हम कर सकते हैं, तो फिर एक और डिमेंशन खुल जाएगा. ये आप ये देखिए कि कुछ महीने पहले ये जो है मोहसिन नकवी साहब, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है ओवर रेट करते हैं. ये गए थे अमेरिका और ये लोगों को मिलने की कोशिश कर रहे थे और इवेंचुअली ये जो विल्सन से मिले. जिस दिन ये जो विल्सन से मिले और बाहर उनके दफ्तर से निकले तो जो विल्सन ने ट्वीट की, फ्री इमरान खान. ठीक है, मतलब ये लोग समझते हैं कि यहाँ पर क्योंकि इनकी जो है स्क्यूड रेटोरिक होती है वो चल जाती है, ये जो कहना चाहते हैं यहाँ कह देते हैं और चल जाता है.
वहां नहीं चलना था ये. देखिए मैग्निट्स्की सैंक्शंस का कोई मकसद है ना. देयर इज अ बिल दैट वाज पास्ड, राइट, एंड इट हैज अ वेरी स्वीपिंग काइंड ऑफ मैंडेट अंडर दैट बिल कि आप उन मुल्कों को जरूर सैंक्शन करेंगे जो डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करते हैं, जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जहां पर जो है वो स्टेट ऑपरेशन है. ये उसी की कंटिन्यूएशन है. ठीक है ना. इस वक्त जो है पूरे दुनिया में देख लें आप, कोई आपको स्टेट नजर आती है सिवाय कोरिया के जहां पर इस किस्म की जो है, इस किस्म के जो है ऑपरेशन है. आप देखें कल जो है उर्दू न्यूज के जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनको अगवा कर लिया गया. आई मेट द यंग गाय, ही इज अ प्रॉपर जर्नलिस्ट, अच्छा जर्नलिस्ट है वो. ठीक है ना. तो उसको आपने उठा के उसको बंद कर दिया, जो बोलेगा उसको बंद कर देंगे. तो उसका रिजल्ट यही होना था. अभी HRF आई थिंक 4311 है जो इसका बिल का जो नॉमेनक्लेचर है, एंड इट्स अ बाय पार्टिजान बिल. जैसे आपने मेंशन किया, सिर्फ जो विल्सन नहीं है, पेनेटा भी है जो डेमोक्रेट है. तो नॉर्मली जब बाय पार्टिजान बिल्स आते हैं उनका मकसद ये होता है कि दोनों साइड्स जो है डिवाइड की वो एक चीज पे मुत्तफिक हो रही हैं. आपको याद है कि पहले भी एक रेजोल्यूशन जो पास हुई, आई थिंक 901 थी शायद, उसमें दोनों तरफ से जो है 368 आउट ऑफ 375 वोटेड इन फेवर ऑफ दैट बिल. ठीक है ना. ये फैक्ट्स है. और बात ये है कि आप इस दुनिया में, आज की दुनिया में विच इज वेरी कनेक्टेड, हर चीज कनेक्टेड है, आपकी इंफॉर्मेशन कनेक्टेड है, आपके जो है ट्रेड बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे. तो आप इस किस्म की जो है वो हडर्मी करेंगे. एक तरफ आपका जो डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि जी हम तो वेंटिलेटर पे हैं, तो फिर जिसका बटन वेंटिलेटर के पास है फिर उसकी आपको सुननी पड़ेगी. मैं आपको पीटीआई का पर्सपेक्टिव दे देता हूँ. वी आर नॉट लुकिंग टुवर्ड्स a phone call from Donald Trump to say free Imran Khan. No, we are not looking for that. We are looking for an indigenous movement that will free Imran Khan. He has been denied his legal rights. He has been denied his basic fundamental rights. ठीक है ना. मुलाकात नहीं होने दे रही, बेटों के साथ बात नहीं होने दे रही. हर हफ्ते में जेल मैनुअल कहता है कि फैमिली के साथ उसकी मुलाकात होनी चाहिए. इट्स ओनली ह्यूमैन, ह्यूमैनिटी डिमांड्स इट. अब देखें केपी गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने प्रिजनर्स के लिए वीडियो कॉल सिस्टम सेटअप किया, सो दे कैन टॉक टू देयर फैमिलीज, दे कैन मीट देयर फैमिलीज थ्रू अ वीडियो कॉल. बिकॉज बड़ा मुश्किल होता है प्रिजनर्स की फैमिलीज के लिए टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस only to go and meet family members in jail. प्रिजनर को दी हुई है पनिशमेंट, तो प्रिजनर के लिए है, उनकी फैमिलीज का क्या कसूर है? फैमिलीज कैन नॉट बी पनिश्ड बाय कीपिंग देम अवे फ्रॉम देयर लव्ड वंस. ये इंपॉर्टेंट बात है. लेकिन आपके जी प्लीज. डॉक्टर साहब, प्रिजन का मकसद रिहेबिलिटेशन है, मोर देन पनिशमेंट. इट इज टू रिहेबिलिटेट द पर्सन, टू मेक देम turn around and become productive members of society. नहीं तो अगर आप go back into Muslim history, there was no concept of a prison, so punishment had to be meted out, which was according to Sharia laws, whether it was amputation under certain circumstances or whatever, because there was no prison, there was no concept of a prison. तो prison का तो concept ये है कि yes, somebody who's committed a crime must do the time. यही कहते हैं ना, if you have committed the crime, do the time. तो वो टाइम तो कर रहा है, but that doesn't mean कि उसकी फैमिली को भी आप टाइम करवाएं. हमारे प्रिजन्स में खवातीन हैं जिनके बच्चे प्रिजन में पैदा हुए हैं और प्रिजन ही में रह रहे हैं. तो ये सारी चीजें हैं. और ये जो अभी जो बिल पेश हुआ है जो विल्सन और पेनेटा का, जी मैंने कहा बड़ी ऑफुल सिचुएशन है कि बच्चे जेल में पैदा हों, फिर वहां पे परवरिश हो उनकी. They have not seen the world outside of वो बच्चों की, और ये रियलिटी है. तो कोई जुर्म नहीं किया. ये तो ग्रीक ट्रेजेडी की तरह का है, बाप का या माँ का गुनाह जो है वो बच्चों को पास ऑन हो जाए. जी बिल्कुल ठीक है ना. और बच्चों की एजुकेशन, उन बच्चों का मेंटल मेकअप देखे ना, द एनवायरनमेंट दे ग्रो अप इन, उस मेंटल मेकअप को देखे. मैंने इस पे काम किया हुआ है. देयर वाज वन ऑफ आवर mentees from NIC in LUMS, उनका भाई इस पे काम कर रहा था. I reached out to some of the organizations,
most are not willing to touch, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट नहीं है अडॉप्शन का कि वो अडॉप्ट करके उन बच्चों को जो है बाहर निकालें। सत्तार ईदी साहब तो है नहीं जो ये काम कर देते, बाकी जो है ज्यादातर जो है वो इससे कतराते हैं, they don't want to go anywhere near it। लेकिन ये रियलिटीज हैं। लेकिन कमिंग बैक टू what is happening in the US Congress right now, ठीक है ना, ये I'm telling you again, we are not interested कि जी सिर्फ एक कॉल आएगी और वो रिहाई हो जाएगी। No, we don't want that, ठीक है ना। There is a process, वो प्रोसेस, और खान खुद कह रहा है कि I will contest through these courts even though I have no confidence in these courts because the courts have been stuffed after the 26th amendment। पता है, हमें सबको पता है कि क्या हाल बना हुआ है कोर्ट्स का, ठीक है ना। क्या 33 या 35 आपने नंबर बढ़ा दिया सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, और आपने कोर्ट स्टफिंग की हुई है। आपने वो जजेस वहां पर उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में लगा दिए हैं जो आपको पता है कि कोई रिलीफ किसी को नहीं देंगे, नहीं दिया, पहले भी नहीं दिया, 2 साल हो गए। मतलब काजी फाइज ईसा को नजर ही नहीं आता था इस मुल्क में हो क्या रहा है, उसको नजर ही नहीं आता था कि किडनैपिंग्स हो रही हैं, उसको नजर ही नहीं आता था that people have been killed on the streets। Zile Shah, a special child, was killed after brutal torture। Qazi Faiz Isa को नजर नहीं आया। What is the custodian of the law supposed to do? What is his job? Even Bandial didn't see it। और चीजें भी हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर अभी एक मसला एक हमारे सामने आ रहा है। जरा ये इसी से एक्स से ही मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो लिख रहे हैं कि the bill has been introduced during ongoing lobbying activity by Imran Khan's Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI party। That's total sheer nonsense। And further, PTI-aligned activists have repeatedly pressed American legislators to interfere in Pakistani politics since the ouster of Khan from office in 2022। Dr. Zafar, these are lies। These are lies। ये मुझे नहीं पता किस credible incredible जर्नलिस्ट ने ये लिखा है या किसने ये स्टोरी बता देता हूँ। न्यूज़ एक्स ये जो है ये वंशिका त्यागी, कौन? Probably Vanshika Tyagi, probably an Indian journalist who's reporting for NewsX। That tells you the story itself। That tells you the story itself। देखिए, the reality is Pakistani Americans, especially who are in connection with the congressmen there, with the senators there, they have only asked for one thing repeatedly, that the state oppression that is going on in Pakistan should be curtailed, should be condemned, and whatever influence the US may have, only application is for transnational repression। ये transnational repression भी बहुत बड़ा issue है, Canada में भी है, US में भी है। I know of a bill that has been tabled in Canada also, transnational repression। Pakistanis who have moved and settled in America, they are American citizens, उनकी families जो पाकिस्तान में हैं उनको रिप्रेस किया जा रहा है, उनको हरास किया जा रहा है। सलमान अहमद इज अ फेमस वन अमंगस्ट देम, यूएन एम्बेसडर, उसकी फैमिली को हरास किया जा रहा था यहाँ पे। ये इसको एक और तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में तो खुद ये बात हो रही है कि वहाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है उसके ऊपर बहुत सख्ती कर दी गई है, और वहाँ जो डेमोक्रेटिक सारा प्रोसेस है वो इनके आने के बाद, ट्रम्प साहब के आने के बाद, a lot of it has been curtailed, jeopardized, जैसे भी आप कहना चाहें। वहाँ पे पाबंदियां लग रही हैं चीजों पे, इमिग्रेंट्स के साथ क्या हो रहा है, सिविल राइट्स के साथ क्या हो रहा है। In the midst of all this, जो ये अपने मुल्क में कर रहे हैं अमेरिका में, why are they suddenly becoming worried about what is happening in Pakistan? So it's not just a question, देखिए, again, it's not a question about what's happening in Pakistan। It's a question that has been raised by Pakistani Americans। They are Pakistani Americans, they are Americans, they voted in the last election, they voted with a purpose, they voted with an understanding कि जनाब आप जो है, you are the ones who are supporting this regime। जो regime है इस वक्त, उसको support कहाँ से आ रही है? IMF उसको पैसे क्यों दे रहा है?
جب بھی آئی ایم ایف کے ساتھ جا کے چیزیں پھنستی ہیں کہاں سے انکلاگ ہوتی ہیں, کون ڈائریکشن دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ہے اصل ایشو. جہاں تک ڈیموکریسی کا تعلق ہے اور امریکن ڈیموکریسی کا تعلق ہے, دیر از نو ایکویکیشن ود پاکستان. کوئی ایکویکیشن نہیں ہے, کوئی ایکویشن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے دیٹ کورٹس فنکشن. وہاں یہ نہیں ہے, وہاں قاضی فائز نہیں بیٹھا ہوا, وہاں پر جو ہے بندیال نہیں بیٹھا ہوا, وہاں یا افریدی صاحب نہیں بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے نا. دیر از اے فنکشننگ ڈیموکریسی. اگر اوور ریچ ہو رہی ہے, ایگزیکٹو اوور ریچ ہو رہی ہے, تو وہ ایگزیکٹو اوور ریچ کریکٹ ہوگی. ابھی تو 4 مہینے نہیں ہوئے. He took oath on the 20th of January. How much time has elapsed? It's not even 3 months. ٹھیک ہے نا. They have a corrective mechanism. That corrective mechanism will kick in. When people will go to the courts will examine. ٹھیک ہے نا, یہ ہوگا, اس میں مجھے تو کوئی شک نہیں ہے. اور جو باقی چیزیں ہیں, ایلان مسک ہے, ٹھیک ہے نا. ایلان مسک suddenly his mask has slipped and we are seeing a very different person. بٹ اس کا ٹاسک کیا ہے؟ اس کا ٹاسک کیا ہے؟ ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی. اگر وہ کہتے ہیں جی 1 ٹریلین روپیہ میں بچا سکتا ہوں بائی میکنگ گورنمنٹ مور ایفیشینٹ, تو وہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. امیگریشن کا ایشو جو ہے یہ بڑا پرانا ایشو ہے, بڑا کمپلیکس ایشو ہے. ٹھیک ہے جی. اس سے پہلے اسی طریقے سے دیکھنا ہے. جی رچرڈ گرینیل کی ٹویٹس تھیں, پھر ابھی زلمے خلیل زاد صاحب نے کچھ ایسے بیان دیے خان صاحب کے حق میں, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کے خلاف پاکستانی میڈیا میں ایک موو بھی چلی زلمے خلیل زاد کے بارے میں, because of his role in Afghanistan and why is he making statements in favor of Imran Khan. اچھا, تو اس کی وجہ ہے دیکھیں برش سائڈ کیا گیا. یو تھنک کہ یہ جو اب کانگریس کا بل ہے, یہ بائی پارٹیزن دونوں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن نے مل کے جو یہ ٹیبل کیا ہے, اس کی ویلیو ہوگی کہ پہلے اس طرح سے نظر انداز کر دیں گے ٹویٹس کی طرح؟ کون ڈاکٹر صاحب کون نظر انداز کرے گا؟ وہ جو وینٹیلیٹرز میں ہیں وہ نظر انداز کریں گے. دیکھیں افغانستان کا جو ایشو ہے اور عمران خان کی جو اگر بات کرتا ہے زلمہ خلیل صاحب, وہ اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہے کہ جب طالبان کے ساتھ امریکنز کی نیگوسیشنز ہوئی قطر میں, ٹھیک ہے نا. زلمے واز اے فنڈامنٹل پارٹ آف دوز نیگوسیشنز اینڈ ہی نوز دا رول دیٹ عمران خان پلیڈ. اگر آپ کو یاد ہو وائٹ ہاؤس میں آئی تھنک 2019 تھا جب عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ بیٹھے ہوئے تھے. عمران خان نے اس وقت بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا تھا کہ دیر از نو ملٹری سولوشن ٹو افغانستان, یو ول ہیو ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ٹاک ٹو دیم. اس سے پہلے آپ کو یاد ہو ٹرمپ کہہ چکا تھا کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے, انائلیٹ کر دیں گے. لیکن اس کے بعد جب عمران خان نے بیٹھ کے اس سے بات کی کہ بھائی ملٹری سولوشن نہیں ہے, آپ کو ان سے بات کرنی چاہیے, تو اس کے بعد وہ قطر کی نیگوسیشن شروع ہوئی which زلمے خلیل زاد was leading for the Americans. اس کو پتہ ہے عمران خان کا کیا رول تھا in ending the conflict in Afghanistan. اس کو پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اینٹی وار ہے. عمران خان ہمیشہ کہتا ہے کہ بیٹھ کے بات کرو. اب بھی وہ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہے, لیکن آپ بیٹھے ہیں اس کے ساتھ, آپ بیٹھے تو صحیح اس کے ساتھ, کمیٹی مت کھیلیں, go and directly talk to him. تو کین وی سے کہ جو اس وقت پاکستان نے پوزیشن لی ہے افغانستان کے بارے میں, اور ایک ہارڈ اسٹیٹ کا اب ایک نیا آئیڈیا آیا ہے, پاکستان ہارڈ اسٹیٹ بنے گا اور افغانیوں کو نکال دیا جائے گا اور وہاں پہ اٹیکس کیے جائیں گے وٹ ایور ہیپنس. یہ اس کے اوپر ریئیکٹ کیا ہے یو ایس کانگریس مین نے, یا اف یو وانٹ ٹو سے یو ایس ڈیپ اسٹیٹ نے؟ دیکھیں جو ولسن کا جو تھا یہ تو افغانستان کے زلمہ خلیل زاد کے وزٹ سے پہلے کا ہے. جہاں تک ڈیپ اسٹیٹ کا تعلق ہے, اینڈ وی آر ٹاکنگ ناؤ اباؤٹ دی یو ایس ڈیپ اسٹیٹ, ٹھیک ہے نا. یہ جو سارا ڈرامہ ہوا کہ ایک بندہ انہوں نے اٹھا کے ہینڈ اوور کیا, دے وانٹیڈ ٹو گیو ٹرمپ اے ون, ٹھیک ہے جی, بفور ہز اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس. اور اس نے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس میں ہی تھینک پاکستان, اور یہاں پر شادیانے بج گئے, ڈھول دھمکنے شروع ہو گئے, ناچا گانا شروع ہو گیا, گھنگرو توڑ دیے جو ہماری ٹاؤٹ میڈیا ہے. میں انفارچونیٹلی آئی ہیو ٹو یوز دس ورڈ. دیکھیں پاسٹر بین ہافر جو جرمن تھرڈ رائک کے سامنے کھڑا ہوا تھا, they put him in prison and eventually they executed him. بٹ اس نے بڑی خوبصورت ایک بات کی,
उसने कहा stupidity is worse than evil. Stupidity is worse than evil. The Germans were evil, but he said the bigger problem is they're stupid. Adolf Hitler was stupid. He destroyed his own nation through his own stupidity. Evil, once combined with stupidity, is the most lethal combination you can possibly have. Hard state का मतलब क्या है डॉक्टर साहब? What is a hard state? ठीक है ना? Yeah, this Hard is interesting. state, How तो आप जरा इसको एक्सप्लेन करें कि आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं. जी देखें, एक हार्ड स्टेट है सिंगापुर, राइट, वेयर देयर इज रूल ऑफ लॉ बट देयर आर वेरी फ्यू फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स. इंडिविजुअल राइट्स नहीं है. रूल ऑफ लॉ जरूर है. पीपल आर ट्रीटेड इक्वल. इफ दे कमिट अ क्राइम ऑफ एनी नेचर, रिच और पुअर आर ट्रीटेड इक्वल. ऊपर से द स्टेट interferes at a very deep level in people's lives also. But Singapore today is one of the most developed nations. Singapore, right? People in Singapore are very happy because they have everything they need. Great infrastructure, a high per capita income, all those things. That is one hard state where the writ of the government is very strong, right? But you do not have repression. You do not have people being beaten up on the streets. You don't have people being shot. ठीक है ना? दूसरी हार्ड स्टेट में देख लेते हैं, चाइना को देख लेते हैं. ठीक है ना? चाइना इज नॉट अ सॉफ्ट स्टेट, चाइना इज अ हार्ड स्टेट बाय दैट डेफिनेशन. कि चाइनीज स्टेट जो है सिंगल पार्टी सिस्टम है, ठीक है ना, बट चाइना इज वेरी प्रॉस्परस. पीपल इन चाइना आर प्रॉस्परस. ठीक है ना? तो वो एक हार्ड स्टेट है. फिर हार्ड स्टेट थी पॉल पॉट की, कंबोडिया की. He killed millions because he thought his writ, his individual writ should carry the weight. उसने तबाह कर दिया. Gaddafi was a hard state. Libya under Gaddafi was a hard state. 35 years of dictatorship, personalized dictatorship. Syria under Bashar al-Assad, and before that Hafiz al-Assad, was a hard state. Repression, all kinds of, जो कहते हैं ना फंडामेंटल राइट्स का पामाल करना, उनको तबाह करना. जिसको चाहा डिसिडेंट को उठा के मार दिया, जेल में डाल दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच लिमिट कर दी, सब कुछ कर दिया, एंड नो बेनिफिट टू द पीपल. ठीक है जी, दैट इज अ हार्ड स्टेट. शाह ऑफ ईरान वाज अ हार्ड स्टेट. द सबाक रूल्ड. द शाह वाज द पुलिसमैन ऑफ द गल्फ. ठीक है ना, propped up by the Americans. Saudi Arabia and Iran are also examples जी, of hard states. Saudi Arabia Iran is or actually, अच्छा, interestingly, Iran is actually softening quite a degree. ईरान में फंडामेंटल फ्रीडम्स काफी रिस्टोर हो चुके हैं, मैंने देखा है, आई स्टडीड. ठीक है ना? उसके बाद आप देख लें कि बुरुंडी हो गया, हार्ड स्टेट है. इडी मीन कि युगांडा का हार्ड स्टेट था. ये थी हार्ड स्टेट्स, बट दीज आर पर्सनलाइज्ड डिक्टेटरशिप, पर्सनलाइज्ड ऑथोरिटेरियन स्टेट्स. तो हमारा सवाल ये है कि हार्ड स्टेट का मतलब क्या देना चाह रहे हैं. अगर आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, अगर आप एप्लीकेशन ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो आपको कोर्ट्स अपने जो है उसको ज़्यादा फाल करें. आप अपने जुडिशियल सिस्टम को ज़्यादा जो है उसको कंट्रोल मत करें. जजेस स्टफिंग ना करें, बेंच स्टफिंग ना करें, तो बेहतर हो जाएंगी चीज़ें. अगर आप बात करते हैं कि जी वो दहशतगर्द हम पकड़ते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है, भाई आपकी प्रोसिक्यूशन सही नहीं है, आपका जो सिस्टम ऑफ पुलिसिंग है वो सही नहीं है, तो आप हमेशा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स ही करते आए. दैट इज अ हार्ड स्टेट. अब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जब होंगी तो उसमें इनोसेंट भी मारे जाएंगे, एंड द लाइफ ऑफ वन इनोसेंट इज मोर प्रेशियस देन 100 क्रिमिनल्स. ठीक है ना? अभी आप देख लें बलूचिस्तान में क्या हो रहा है. 50 साल से आप हार्ड स्टेट लेके चल रहे हैं बलूचिस्तान में, 50 years plus you have been a hard state in Balochistan. There are hardly any fundamental rights. Your right to vote for your own representatives is seriously curtailed. बलूचिस्तान की कोई असेंबली जो है बगैर कोalition की नहीं आई. बलूचिस्तान की कोई असेंबली ऐसी नहीं थी जो अपने लिए, अपने सूबे के लिए बात कर सकती. लास्ट प्रॉब्ली वाज अताउल्ला महंगल, जो अब हम बात कर रहे हैं 97 की, उस वक्त की हम बात कर रहे हैं. ठीक है ना? अदरवाइज तो वहाँ कोई फ्रीडम नहीं, तो आप कौन सी हार्डनिंग करेंगे वहां पर, और क्या हार्डनिंग करके आप रिजॉल्व कर लेंगे?
جی تو اس سے کوئی معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے آپ کا خیال؟ سوال ہی نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کو جو ہے ریسٹور کرنی پڑے گی ڈیموکریسی, آپ کو ریسٹور کرنی پڑے گی اپنی آئین کو, آپ کو ریسٹور کرنا پڑے گا, آپ کو پارلیمنٹیرینز یا پیپلز مینڈیٹ اس کو ریسپیکٹ کرنا پڑے اس گا. بل کے دیکھیں مطابق جی 180 دن دیے جائیں گے یہ ساری چیز ریورس کرنے کے لیے. If it جی doesn't happen تو پھر اس کے جو بھی consequences ہیں وہ بالکل. they will come into دیکھیں effect. it begins with a single thing, ٹھیک ہے نا, it begins with a single thing. 180 days میں ساری چیزیں تو نہیں ہو جائیں گی, ججز نہیں چینج ہو جائیں گے, 26 امینڈمنٹ میں بھی سافٹن اپ ہو جائے, 27ویں امینڈمنٹ آ جائے, کچھ ہو جائے. آج اس دنیا میں کہاں پر آپ ملٹری کورٹس کو جو ہے اسٹیبلش کر سکتے ہیں؟ آپ کہاں سزائیں دے سکتے ہیں ملٹری کورٹس کے تھرو؟ اور آپ نے سزائیں دی ہیں کس آئین کے تحت دی ہیں, آپ نے کس قانون کے تحت دی ہیں؟ آپ نے بنا آپ نے یہ بنا لیا کہ جو ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ ہو گیا, جھوٹ کا بیانیہ ہے, فالس فلیگ تھا May 9, اس کے شواہد ہیں. اسی لیے تو آپ آج تک جو ہے جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے, اسی لیے آج تک جو ہے 9623 جو کور کمانڈر ہاؤس کا جو کیس ہے اس کے چلان ہی کمپلیٹ نہیں ہوئے, بار بار آپ چینج کرتے ہیں. 2 سال ہونے والے ہیں, another 2 months it will be 2 years because you do not have any evidence. ایویڈنس ہو تو آپ کسی کو پروسیکیوٹ کریں گے. یہ مطلب یہ ریالٹیز ہیں, اور پاکستان کی عوام اب جو ہے وہ باخبر ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, سب کو پتہ ہے. ہم نے But on the ریسنٹلی other فوکس گروپس hand, کیے the ہیں. government ministers are still taking a very aggressive stance. سر وی نو دی کیپیبلٹی, وی نو دا مائنڈ سیٹ. آپ کو مائنڈ سیٹ نہیں پتا, رانا ثناء اللہ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, خواجہ آصف کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. خواجہ آصف وہ بندہ ہے جس نے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ فوج عوام کی ہڈیوں سے گوشت بھی نوچ کے کھا گئی ہے, یہی کہا تھا نا, اٹس آن دا ریکارڈ. Because they didn't realize کہ بھائی there is something called social media, there is something called the information آپ سے age. پوچھنا چاہوں گا فیصل صاحب, آپ نے یہ جو تذکرہ کیا فائز صاحب کا اس کے حوالے سے, آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ کہیں پولیٹیکلی ایل ایڈوائز ہو گئی ہے, ان کو کچھ ایسی باتیں بتائی گئی ہیں because they are frankly speaking they are not trained for politics, they are not trained for economy, they are not trained for things جس میں وہ inadvertently involved ہوتے چلے گئے. Absolutely they're not. دیکھیں the issue ڈاکٹر صاحب is $200 billion empire. Real estate, banking, insurance, fertilizer, oil. پالیٹکس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جو کرنٹ پولیٹیکل It's سینیریو all ہے mixed up. ڈاکٹر صاحب it's mixed up. تو یہ ایل ایڈوائز ہوئے کہیں پہ, ان کو ایسی باتیں بتائی گئی یا ایسی کوئی تصویر دکھائی گئی جس کی وجہ سے انہوں نے ایسے ڈیسیجن سپورٹ کر دیا. یہ کس کی ایڈوائس لیتے ہیں؟ یہ کسی کی ایڈوائس نہیں لیتے, ٹھیک ہے نا. یہ کیا عرفان صدیقی کی ایڈوائس پہ کر رہے ہیں؟ عرفان صدیقی وہ کون ہے اس کا مجھے پتہ ہے. دیکھیں تو وہ خود یہ تو ان کے سوچنے کی بات ہے کہ وہ دیکھیں کہ انہیں کون ایڈوائز کرتے رہے ہیں جنہوں نے سچویشن کو اتنا کمپلیکیٹ کیا. سر ان کو کوئی ایڈوائز نہیں کر رہا, یہ مائنڈ سیٹ ہے جو پی ایم اے سے ڈیولپ ہوتا ہے, یہ ادر کا مائنڈ سیٹ ہے. وی نو ایوری تھنگ, دے ڈونٹ نو اینی تھنگ. یہ مائنڈ سیٹ ہے جو این ڈی یو میں ڈیولپ ہوتا ہے, وہاں پر مشاہد حسین سید جیسے جا کے لیکچر دیتے ہیں. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے. یہ ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے کہ آپ نے اشارہ کر دیا کہ یہ ایڈوائس کہاں سے آتی ہے. ان کا انوائرمنٹ کیا ہے. They believe that all power comes from the barrel of a gun. That's all they're trained for. They do not understand that there is an ethos of a nation and it is the people of that country. آپ یہ دیکھیے اس وقت the kind of resentment amongst the people. We've recently conducted focus groups and I can tell you, young Pakistanis, they don't even want to talk, leave alone join the army. They don't. ایک بندے نے نہیں کہا کہ جی میں جوائن کرنا چاہتا ہوں, ایک بندے نے نہیں کہا. یہ کہاں سے ہوا ہے؟ We are a garrison state from day one. We are a garrison state. Between the period 2018 to 2021, I went to Balochistan multiple times.
and I was engaging with universities there. Hmm. The largest amongst them is the Balochistan University in Quetta, right? Buitan's is the second university there. Then I went to Kuzdar also, Zob also, and I engaged with the Gwadar online. Hmm. You cannot imagine the amount of resentment and actual hatred that's there. And it's not just the Very Baloch, unfortunate. it's the Pashtun Very also. Yes, very unfortunate. But I hope we find a way to engage in a good dialogue with these people और ये मामला politically settle हो जाए. Thank you very much, sir. Thank you very much once Okay, again. thank you. देखने का Thank शुक्रिया. खुदा हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद. Khudafis.